Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to the Veterans Competitive Exams Preparatory Classes session especially designed for the Inspector and Revenue jobs announced by Federal Public Service Commission. These tests are designed and conducted by Mr. Faheemuddin. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है व्यूअर्स वो सेक्शन 56 टू सेक्शन 60 है। ये हमारे कोर्स का फाइनल सेक्शन है क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हमें इन 3 चैप्टर्स के बारे में स्टडी करने के लिए कहा गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि आने वाले 2 से 3 दिन में रिवीजन क्लासेस जो है वो लेने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम एक मेगा टेस्ट करेंगे जो 50 to 100 MCQs पर होगी। तो जिन भी दोस्तों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो इस चैनल से वो वीडियोस भी देख लें ताकि उनको जो है वो रिवीजन में आसानी हो सके। मूविंग ऑन टू आवर टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ पर्सन इज़ अलाउड टैक्स क्रेडिट। किसी भी पर्सन को, पर्सन से मुराद यहाँ आपको पता है जो हम पहले स्टडी करके आए हैं, तो पर्सन फेडरल गवर्नमेंट में भी आ जाता है, इंडिविजुअल और कंपनी वगैरह में भी आ जाता है। तो उसे टैक्स क्रेडिट कब अलाउड है? If he donates in Board of Education registered under federal or provincial law, if voluntarily contributes in hospital established or run in Pakistan, या अनलिखा हुआ है run in Pakistan, and C, if contributes in non-profit organization or eligible person under 100C, जो person की eligibility है वो 100C में defined है। D, all of these. Question number 2 है which of the following schedule define the charitable funds or organization? 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, 13th शेड्यूल एंड 14th शेड्यूल, इनमें से कौन सा शेड्यूल डिफाइन करता है? उसके बाद हमारा है क्वेश्चन के हाउ मच टैक्स क्रेडिट इज अलाउड टू द पर्सन इन केस ऑफ डोनेशंस। कितना टैक्स क्रेडिट अलाउड है? 20%, 30%, 40%, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मच टैक्स क्रेडिट इज अलाउड टू द कंपनी इन केस ऑफ डोनेशंस। अब ऊपर पर्सन की बात हुई है यानी इंडिविजुअल की बात हुई है और यहाँ पर कंपनी की बात हुई है, तो 20%, 30% और 40%, एंड डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 है इन व्हाट कंडीशंस द टैक्स क्रेडिट इज अलाउड बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, यानी शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो टैक्स क्रेडिट अलाउ होने के लिए कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी है? इन कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग न्यू शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक बाय लिस्टेड कंपनी, resident person is the original allottee of the shares. Shares are required from Privatization Commission of Pakistan, and D, all of these. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द ईयर ऑफ इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ऑर्डिनेंस किस ईयर का है? ईयर 2000, ईयर 2001, 2002 एंड 2003। क्वेश्चन नंबर 7 है इन व्हाट कंडीशंस टैक्स क्रेडिट फॉर इंश्योरेंस बी विड्रॉन बाय कमिश्नर। अगर कमिश्नर से विड्रॉ करना चाहता है तो वो कौन सी कंडीशंस होगी? If the policy is surrendered within 2 years of its acquisition, within 3 years of its acquisition, and within 4 years of acquisition, and D, none of these. Question 8, tax credit is allowed in which of the following cases? कौन सी सूरत हाल में टैक्स क्रेडिट अलाउड है? If a company is premium in health, paid premium in health insurance company, premium in health in insurance company registered with Securities Exchange Commission of Pakistan, where person is contributed in the approved pension fund for the year, where the shares are not disposed of within 24 months, in D, all of these. So number 9, a new company established between 1st July 2015 to 30th June 2019 is allowed the tax credit for 6 years, 8 years, 10 years, D, none of these. Question 10, a new company is allowed tax credit if it's more than 50 employees are registered with employees old age benefit institutes institution. It's more than 50 employees are registered with employees social security institutions of provincial government. Its manufacturing unit is registered under Companies Act and have registered office, D, all of these, registered office in Pakistan. Question number 11, a person who installs points of sale machine shall be allowed tax credit of। अगर कोई point of sale machine, आप ये ध्यान में रखिए कि point of sale machine जैसे आप मिसाल के तौर पर किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको जो बिल बना के दिया जाता है मशीन के ज़रिए उसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहा जाता है। तो उस पर टैक्स क्रेडिट अलाउड है 125,000 पर मशीन, 150,000 पर मशीन एंड 100,000 पर मशीन, डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 12, टैक्स क्रेडिट अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड विल बी रिफंडेड, कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड बैक, नथिंग इज अलाउड। तो क्या इसका आंसर होगा? क्वेश्चन 13, हाउ मच क्रेडिट इज अलाउड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट और मशीनरी। तो कितना टैक्स क्रेडिट अलाउड है? 5% ऑफ 5%, 10%, 15%, एंड डी, नन ऑफ दीज। Question 14, what would happen if working capital is obtained by short-term loan from banking companies
A. Disqualification from the tax credit. B. Doesn't disqualify from tax credit. C. Partial disqualification from tax credit. And D. None of these. Question 15. 100% tax credit is allowed for coal mining in Sindh, Punjab, KPK, Balochistan. 16. IT exporters are allowed tax credit till 2022, 2023, 2024, 2025. Question number 17. Eligible person under Section 65G means greenfield industrial undertaking, manufacturing of goods, shipbuilding, all of these. Question number 18. A person is allowed tax credit if it is established between 2019 and 2021, 2022, 2023. D. None of these. Question 19. In which of the following cases tax credit is not allowed to the person? If it has formed a new plant by splitting existing undertaking, if it has formed by transferring the plant or machinery from existing undertaking. C. Both A and B, and D. None of these. Question 20. Industrial undertaking set up by 2023 which produces equipment for the production of power generation is allowed tax credit for the period of 2 years, 3 years, 4 years and 5 years. सो दोस्तों यहाँ पर हमारा व्यूअर्स हमारा यहाँ पर जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट होती है। तो आगे जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ रिवीजन क्लासेस करने वाले हैं और उसके बाद फिर हमारी जो है वो एक मेगा टेस्ट होगी। तो मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पिछली वीडियोस को देखें, उन पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले जो हर वीडियो है वक्त पर मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।